Investment again is very simple. Money that you bring into the business is capital employed, and what you do with this money is your Investment. simple. As simple as that. So, what will invest? What will be investment? So the money that you bring into the business is capital employed. यानी कि आपने 32,000 करोड़ का पैसा बिजनेस में लगाया. अब ऐसे आप इस 32,000 करोड़ के पैसे से क्या करोगे? आप इसको बैंक में जमा कराओगे? आप इसको बैंक में नहीं जमा कराओगे. तो अगर आप बैंक में नहीं जमा कराओगे तो क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे. यानी कि आप लैंड खरीदोगे, लैंड के ऊपर बिल्डिंग खड़ा करोगे, बिल्डिंग के अंदर प्लांट एंड मशीनरी बिठाओगे, और चूंकि वो आपको फैक्ट्री चलानी है इसलिए आप क्या करोगे? रॉ मटेरियल भी खरीदोगे. So investment is the money that you bring into the business, और उस बिजनेस पैसे से जो आप खड़ा करते हो, that is your investment. How do you calculate the investment? Again very simple. So investment is equal to current assets plus current liabilities. Sorry, current assets plus non-current assets, or let me put it, non-current assets plus current assets minus current liabilities is equal to investment. Everybody, please, okay. Is that clear to everyone? Are you clear about it? Investment कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी बात करते हैं. तो कैसे कैलकुलेट करोगे? वेरी गुड. अब एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे. क्या लगता है आपको कि अगर मैं आपको टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट दूं और आपको पूछूं कि टाटा मोटर्स की कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर कितना है, आप निकाल पाएंगे? नाउ दैट यू नो द फॉर्मूला, you will be able to calculate the capital employed of Tata Motors. Will you be also able to calculate the figure of investment of Tata Motors? Yes, sir. Now that you know the formula, of course you will be able to calculate the figure of investment of Tata Motors also. Now my question to all of you is कि अगर मैं आपको वाकई में टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट दूं और आपसे पूछूं कि दोनों का फिगर कैलकुलेट करो, कैपिटल एम्प्लॉयड का भी और इन्वेस्टमेंट का भी, और आप ये फिगर को कैलकुलेट करते हैं, तो ये दोनों फिगर सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? सेम होंगे, राइट? कैन दे बी डिफरेंट? No, sir. They cannot be different. And why they cannot be different? Remember, because you can never spend more money than what you have. So please find out, calculate in this case that you have the balance sheet that you have in front of you. 32,000 both sides? Yes, Right. sir. So please remember, it will always be same and it cannot be different, and that is because you can never spend more money than what you have. So I'm sure all of you understand as to what is capital employed. Everybody, what is capital employed? All the long-term sources invest in business. All the long-term sources, all the long-term money that you put into the business is your capital employed. And what is investment? What you do with that money, and that is your investment. And I'm sure आज के बाद अगर आपको कोई नींद में भी जगा के पूछेगा कि ये क्या है, तो आप बड़े आसानी से बता सकोगे. Okay. So your capital employed is clear and your investment is also clear. Now let's look at the GWC and NWC. And how do we calculate GWC and NWC? So first of all, let's understand what is gross working capital. Can I read it off? Yes, sir.